welcome to Amers Institute. We are back with our daily current MCQs series and today is 19th of August. तो हम पिछले 24 घंटों में जो भी important हुआ है we will discuss that in this session. Okay, so our first question is the Indian Army contingent departed for joint military exercise Maitri 15 to which country? ठीक है, so एक military exercise है, joint military exercise है, वो इंडिया जो है वो करती है हर साल किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज मैत्री 15 करी जाती है. ठीक है, मैत्री की जाती है. योर ऑप्शंस आर वियतनाम, number 2 is Thailand, number 3 is Indonesia, and number 4 in Malaysia. So which of the following is the correct option? So let's look at it. ठीक है, so Maitri 15 is Maitri is an exercise that India does with Thailand. Okay, इंडिया जो है वो ये एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ करता है एंड एवरी ईयर इट्स कंडक्टेड एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर. अगर इस साल थाईलैंड में हुई है तो नेक्स्ट ईयर इट विल बी कंडक्टेड इन इंडिया. ओके, सो दैट इज हाउ द ऑल्टरनेशन गोज. ओके, so this year it's the 15th edition and this year the representation is done by Gorkha Rifles. Okay, Gorkha Rifles जो हैं वो यहाँ पर जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अदर इम्पोर्टेंट उसी के साथ हम लोग जो है और जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेट्स लुक एट दैट. सो युद्ध अभ्यास इज समथिंग, a joint military exercise that India does with USA. Okay, then Sampriti is an exercise, joint military exercise that India does with Bangladesh. Mitra Shakti जो है वो India does with Sri Lanka, and Shurikaran is done with Nepal, and Shakti with France. Okay, you have to keep in mind that all these exercises are army related. Okay, Air Force and Navy has no role in it. They have their separate military exercises that are done. Those exercises have different names. Okay, so here we are talking about the only the exercises which the military does in joint. So ये military करती है. Okay, this is done by military, joint military exercises done with another country. Every country has a different name. Okay, so with this let's go to question number 2. So recently, अच्छा ये दो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. अ न्यू फ्लावर हैज बीन डिस्कवर्ड. ठीक है, और उनका नाम किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल जो अभी रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है, उनके नाम पर रखा गया है. तो हमें वो बताना है कि किसके नाम पर ये रखा गया है. तो इम्पेशन निम्स पूरजाई जो है वो एक नया हिमालयन प्लांट है. प्लांट हिमालयन है, इट हैज बीन डिस्कवर्ड. ठीक है, तो उसको एक बहुत अच्छे मतलब किसी के ऑनर पे उनको नाम दिया गया है. तो वो नाम किसका है, किसके ऑनर पे इन्हें दिया गया है, वो हमें देखना है. सो योर ऑप्शंस आर निर्मल पूजा. ठीक है, निर्मल पूजा आपका पहला ऑप्शन है. तेंजिंग नॉर्गे आपका दूसरा ऑप्शन है. बचेंद्री पाल आपका तीसरा ऑप्शन है. और डी इज आपा शेरपा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? सो इफ वी टॉक अबाउट दिस, the correct answer is Nirmal Purja. Nirmal Purja is a mountaineer, is a famous mountaineer who died recently. Okay, he died recently, this month only, and he has a record of going of so he has a record कि वो 14 पीक्स जो हैं उन्होंने 6 मंथ्स में ही हैज अचीव. ठीक है, 14 पीक्स में उन्होंने चढ़ाई की है इन 6 months. ठीक है, दैट इज हिज रिकॉर्ड विच इज अ बिग अचीवमेंट. ठीक है, तो रिसेंटली अभी ये काराकोरम रेंज में एक माउंटेन है, माउंटेन बोर्ड, वहां पे माउंट अपनी चढ़ाई कर रहे थे एंड एन अवलांच हैपेंड एंड ही डाइड इन दैट. बिकॉज ऑफ दैट ये जो इम्पेशंस निम्स पूरजाई है उस प्लांट को इनका नाम दिया गया है इनके निर्मल पूजा के ऑनर में. ओके, सो द प्लांट बिलोंग्स टू द फ्लावरिंग प्लांट ग्रुप. ठीक है, तो ये जो प्लांट है वो फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग होती है. इट इज फाउंड एट एन एलिवेशन ऑफ 2000 to 2900 meters. ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? एट द एलिवेशन ऑफ 2000 and 2900 meters. इट ग्रोज इन ह्यूमिड स्लोप्स एंड फॉरेस्ट मार्जिन. ठीक है, तो ह्यूमिड जगह पर होता है जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है उन स्लोप्स पर, और फॉरेस्ट मार्जिन पे इसको पाया जाता है. अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इट इज अबाउट इंडिया एंड भूटान साइंड द टेरिफ प्रोटोकॉल फॉर विच हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट. ठीक है, तो अभी एक टेरिफ प्रोटोकॉल इंडिया और भूटान ने साइन किया है, वो किस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बेस पर साइन किया गया है, ये हमें इसमें बताना है. योर ऑप्शंस आर पुनात सांगचू 1, पुनात सांगचू 2 और मांगदेचू
ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका मांगदेचू है एंड फोर्थ ऑप्शन ताला है. द नेम्स आर डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, सो पार्डन मी. सो पुनात सांगचू एक, पुनात सांगचू टू एंड मांगदेचू जो है वो थर्ड ऑप्शन है और ताला जो है वो फोर्थ ऑप्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पुनात सांगचू टू. ठीक है, तो पुनात सांगचू टू जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. लेट्स लुक एट दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है वो 1020 मेगावाट रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो है. ठीक है, इसकी डेवलपमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? इट विल बी डेवलप्ड बाय पुनात सांगचू टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी. सो इसके लिए अ न्यू प्रोजेक्ट अथॉरिटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड ऑन द नेम ऑफ दिस रिवर. ठीक है, इट इज लोकेटेड इन वांगड्यू फोदरांग डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, वांगड्यू फोदरांग डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है भूटान के. ठीक है, इट इज ऑल्सो द ये जो डिस्ट्रिक्ट है इट इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ पुनात सांगचू रिवर. ठीक है, तो ये पुनात सांगचू रिवर के राइट बैंक पे नोट सिचुएटेड है. और इसका फंडिंग कैसे हुई है? इसका फंडिंग ऐसा हुआ है कि 30% इज द ग्रांट्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है और 70% का लोन इज प्रोवाइडेड बाय इंडियन गवर्नमेंट एट द इंटरेस्ट ऑफ 10%. ठीक है, तो 10% के इंटरेस्ट के साथ 70% का लोन दिया है एंड 30% जो है वो ग्रांट में दिया है. ओके, दैट इज हाउ द प्रोजेक्ट इज फंडेड. ओके, then let's move on to the question number 4, which is Reliance will partner with which company to develop combat engines for fighter jets? कौन सी कंपनी है उसके साथ रिलायंस ने पार्टनरशिप की बात की है टू डेवलप कॉम्बैट इंजन्स फॉर फाइटर जेट्स? ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर, इसके ऑप्शंस हैं बोइंग, रोल्स रॉयस, एयरबस एंड लॉकहीड मार्शिया. सो अगर हम बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाता है रोल्स रॉयस, बिकॉज वी ऑल नो द इंजन्स ऑफ रोल्स रॉयस आर अमेजिंग. सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो रोल्स रॉयस है. प्रोटोटाइप जो है इसका इसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट 2028 तक इसका प्रोटोटाइप जो है वो बाहर आ जाएगा. इट विल बी आउट इन द पब्लिक एंड इट विल प्ले अ की रोल इन इंडियाज फ्यूचर एयर कॉम्बैट स्ट्रैटेजी. तो इंडिया का जो फ्यूचर एयर कॉम्बैट की स्ट्रैटेजी है उसमें ये एक बहुत निर्णायक रोल प्ले करेगा, बिकॉज यू नो द डिफेंस is an important sector and with the volatility in the region, geopolitics region में जितनी भी volatility है उसको लेकर India is concerned about its defense. So India is giving more and more importance to the defense of the country. So यहाँ पर जो है इसको air combat strategy में it will play a key role. Under this, Reliance and Rolls-Royce will explore forming a dedicated aerospace gas turbine complex इन इंडिया. ठीक है, तो एक डेडिकेटेड एरोस्पेस गैस टर्बाइन कॉम्प्लेक्स जो है वो इंडिया में जॉइंटली डेवलप करने की बात की गई है अंडर दिस एमओयू. ओके, सो दिस इज व्हाट योर MCQ 5 was about, 4 was about. Let's look at MCQ 5. Okay, तो MCQ 5 किसके बारे में बात करता है? कल हमने नेशनल अनुभव अवार्ड्स की बात की थी. ओके, हमने बात की थी कि नेशनल अनुभव अवार्ड्स क्या होता है. तो टुडे द क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल रिसीव्ड दिस अवार्ड. ठीक है, कितने लोगों ने इस अवार्ड को जो है वो रिसीव किया है? तो योर ऑप्शंस आर 10, 12, 15 एंड 24. सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर सी, 15. 15 लोगों को ये अवार्ड मिला है एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो यूनियन पब्लिक में काम, यूनियन सर्विस में काम करते हैं, ठीक है, यूनियन की सर्विसेज के लिए काम करते हैं, सेंट्रल सर्विसेज के लिए काम करते हैं, उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको जब वो किसी फोरम में रजिस्टर करवाते हैं, लिखते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसके जो प्लेटफॉर्म, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो अनुभव प्लेटफॉर्म है और ये उसी से रिलेटेड ये अवार्ड है. ओके, सो 15 पीपल हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड दिस ईयर. और ये किनको मिलेगा? उन लोगों को हु आर वर्किंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और उन्होंने अपना आफ्टर रिटायरमेंट और just when they're retiring they have shared their experiences of working in the government. Okay, फिर हम आ जाते हैं जल जीवन मिशन का. जल जीवन मिशन विल बिकम इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस ईयर इट हैज कंप्लीटेड इट्स 7 ईयर. ठीक है, सो दिस इट वाज अनाउंस्ड इन 2019 और इस साल इन 2026 इट हैज कंप्लीटेड इट्स 7 years. सो यहाँ पर बात की गई है, here we have talked about that Jal Jeevan Mission rural household tap water coverage increased from 16.7% in 2019 to over what percentage? So when the mission was started in 2019, the rural household tap water coverage, ठीक है, the water available from the tap for rural houses
were only 16.7% in 2019. Now that we have crossed around 7 years of this mission, what is the percentage that we have reached? What is the outcome of this mission? What have we achieved with this mission? So your options are number A 62%, number 2 72%, number 3 is 82%, and D is 92%. Which of the following is the correct answer? So here the correct answer is 82%. Okay, when the mission was started at that time, around 3.23 crore rural houses were given actually they had tap water connection. Okay, now the number has increased from 3.23 to 15.91 crore. Okay, so it has reached from 2.23 to 15.91 crore. Okay, and this is the data related to rural households. Keep it in mind. Okay, so what is the aim of this Jal Jeevan mission? The aim is to provide every household with safe and adequate drinking water. Okay, so safe and adequate drinking water by the connection of tap. Okay, so that is the aim of this mission, and it is a flagship scheme under Government of India. So it has completed 7 years now, and 82% of the rural households now have tap water connection. Let's move on to the question number 7, which is who was conferred the honorary general rank in Nepal? So recently, honorary general rank was given in Nepal to an Indian. Who was that person? You have to answer that question. Your options are number 1, Dheeraj Seth, number 2, Manoj Pandey, number 3 is Anil Chauhan, and number 3 is Upendra Dwivedi. Which of the following is the correct answer? So the correct answer here is Dheeraj Seth. Okay. So Dheeraj Seth, who is currently Indian Army Chief General, he has been conferred with the rank of Honorary General of Nepal Army by President रामचंद्र पांडेल. ठीक है, तो उन्होंने he has conferred this honorary rank to the to Dheeraj Seth. Okay, and it is a practice. It has started in 1950 and still continues. So it has been done from many years. So the practice has continued this year also, and Dheeraj Seth was awarded the rank of Honorary General of Nepal Army. Okay, everyone, let's move on to question number 8, which is about who won Sport World Cup Chess title 2026 for second consecutive year. So who won this award? And this person has won this award for the second consecutive year. What is the name of this person? Your options are Nakamura, ठीक है, Hiraku Nakamura, Magnus Carlsen, Fabiano Carsena. I can't read this, so I'm sorry. Okay, Fabiano is the third option. Then fourth option is Eliveza Firoza. Okay, so in which of the following is the correct answer? So the correct answer is Magnus Carlsen has won this award for the second time. Okay, so this is the second consecutive year he has won this award, and he belongs to Norway. Okay, he's a Norwegian, and he defeated Belarusian Grandmaster Davis Lazovic. Okay, by 2-0 in Paris. So this was held in Paris, and we have talked about this. Magnus Carlsen is Norwegian, and third position has gone to Hiraku Nakamura, who has secured the third position, and his nationality is American. Okay, everyone. Now let's come to question number 9, which is about Semicon India 2026. So recently, Semicon India 2026 has been has been conducted. What is the theme of this? Okay, we have to talk about the theme we have to talk about the theme of Semicon India 2026. So what is the theme? Your options are building the next semiconductor powerhouse, number 1. Number 2 is shaping semiconductor future. Number 3 is silicon to system building the ecosystem. Okay, this is your third option, and fourth option is semiconductor for a digital India. Which of the following is the correct answer? What is the theme of Semicon India 2026? So the correct answer to this question is silicon to system building the ecosystem. Okay, this is the theme of Semicon India 2026. We have recently seen that the government is paying a lot of
attention to semiconductors and chips. Okay, so the government is keen on producing indigenous chips. So that is important, and you have to keep it in mind. And the theme is Silicon to Systems, building the ecosystem. Okay, everyone. So it was inaugurated by PM Modi. It will be held in Delhi. Okay, so it will be held in Delhi, and it will be hosted by India Semiconductor Mission. Okay, ISM host karega isko, and this comes under MITI, Ministry of Electronics and Information Technology. Okay, and अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, so ISM has collaborated with SEMI. SEMI की full form is Semiconductor Equipment and Material International. So ISM and SEMI will co-host this. Okay. So question number 10 is about Razorpay recently launched an AI powered payment model. Okay, what is the name of that model? You have to answer this. So your options are Agni, your second option is Vulcan, and your third option is Vajra, and your fourth option is Shakti. Which of the following is the correct answer? So the correct answer to this is Vulcan. So Vulcan jo hai, that is the name of this AI powered payment model which has been launched by Razorpay. What is the aim of this model? So this is specifically designed for payments, okay, to increase and enhance the payment intelligence and capabilities. Okay, and it was developed using technology from NVIDIA and Amazon Web Services. So the technology has been taken from NVIDIA and Amazon Web Services. So this was it for today, and I'll see you in the next class. Thank you.